तो ये शैम्पू अप्लाई करने के बाद ऐसा लगता है जैसे हेयर जो है वो पूरा खुल गया। सो लेट्स ट्राई दिस शैम्पू ऑन माय डल, ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर। नाउ माय हेयर हैज कंप्लीटली ड्राइड। तो सबसे पहले जो मुझे इस शैम्पू का सबसे बेस्ट पार्ट लगा वो है द स्प्रेडेबिलिटी। द स्प्रेडेबिलिटी इज ऑसम। आई डोंट थिंक आई हैव यूज्ड एनी शैम्पू अंटिल नाउ जो इतने इजीली स्प्रेड हो जाए एट वंस ड्यूरिंग शावर। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हो, इट हैज डेफिनेटली इंक्रीज्ड द वॉल्यूम ऑफ माय हेयर। लाइक इट क्लेम्स, इट हैज मैलिक एसिड इन इट, इट वर्क्स ऑन द बॉन्ड, एंड आई गेस इट हैज आल्सो इंप्रूव्ड द टेक्सचर। लाइक मैं कोम भी कर रही हूं, देयर इज नो हेयर फॉल एंड इट हैज एक्चुअली वर्क्ड ऑन द टेक्सचर एज वेल। नाउ आई टोटली agree with what the shampoo claims, that is malic acid hai, it works on the hair bonds and it has definitely increased the tensile strength of my hair. However, I believe if you are looking out for something जो hair को soft भी करे, then this might not be the one for you. They say it has ceramide, so definitely I believe कि थोड़ा it should render softness as well. So comment link and I will share the shampoo with you all.